12th Physics, HSC Chapter 6, Superposition of Waves, Unsolved Numericals from page 157. Question number 16 देखते हैं. A standing wave is produced in a tube open at both the ends. It's an open tube. The fundamental frequency is 300 Hz and 300 Hz. Okay. What is the length of the tube? Speed of sound is 340 meter per second. Speed of sound 340 meter per second. What is the length of the tube they are asking? What is the length of the tube? अब fundamental frequency for the open pipe, उसका जो formula है, open pipe का fundamental frequency n is equal to 0 upon Tn ये formula. बस इसमें substitute करना है. So L is equal to 3 upon 2L, 340, 2, 300, where 270, 17 upon 30, that is 0.567 meter, yeah, 56.7 centimeter. So here the length of the tube. Is this clear to you all? Hello? Is that okay? Hello? Next, question number 17. Question number 17. Question number 17. क्या दिया है यहाँ पे? Find the fundamental first overtone and second overtone frequencies of a pipe open at both ends. मतलब यही pipe open at both ends. It's an open pipe. उसका fundamental frequency चाहिए first overtone and second overtone. ये हमको चाहिए for this pipe of length 25 centimeter. Length of the pipe 25 centimeter. ठीक है. If the speed of the sound in the air V is equal to 330 meter per second. अब देखो यहाँ पे उन्होंने डायमीटर के बारे में कुछ नहीं किया है. एंड करेक्शन इसलिए हम निगलेक्ट करेंगे. एंड करेक्शन निगलेक्ट करेंगे तो इसमें यही होगा कैपिटल ए. ठीक है. और इसके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर दिस इज गिवन बाय n इज इक्वल टू v अपॉन 2l. जैसा कि हम जानते हैं तो सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा. v is 330 2 into l that is 25. 25 का हो जाएगा 0.25 मीटर into 0.25. So this will become 330 upon 0.5. 0.5 मतलब 5 और 1 0 बढ़ेगा. So the fundamental frequency is 660 Hz. This is the fundamental frequency. That's the first answer. Okay? अच्छा, इसमें अगर ये है तुम्हारा फर्स्ट ओवरटोन, सॉरी दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इसी का अगला जो होगा, इसी का फर्स्ट ओवरटोन, इसका अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मुझे इसी पाइप को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. ये ऐसा आएगा, लाइक दिस. ओके. और इसका जो फर्स्ट ओवरटोन होता है, फर्स्ट ओवरटोन इज इक्वल टू 2n, सेकेंड ओवरटोन इज इक्वल टू 3n, थर्ड ओवरटोन इज इक्वल टू 4n एंड pth ओवरटोन इज इक्वल टू p plus 1 times n. ये हमने प्रूव किया हुआ है. तो बस फर्स्ट ओवरटोन में इसमें डबल करना है. सो n1 दैट इज फर्स्ट ओवरटोन इज 2 into 660 दैट इज इक्वल टू 0, 1320 Hz. This is the first overtone. Second overtone is 3 into 660 that is 0, 1980 Hz. This is the second overtone. Please check whether this is clear to you. Okay. Question number 18. A pipe open at both the ends has
the fundamental frequency. So it's an open pipe. Open pipe has the fundamental frequency. उसको N भी लिखते हैं या NO भी लिखते हैं. Has the fundamental frequency of 600 hertz. The first overtone of the pipe closed at one end has the same frequency. The first overtone of the pipe, ये open pipe की बात होगी. I'll call this as NO, 600 hertz. ठीक है? The first overtone of the pipe closed at one end has the same frequency as the first overtone of the open pipe. O. देखिए, अगर यही pipe close होगा, same pipe if I close, same pipe होगा या पता नहीं क्या होगा. How long are the two pipes? Okay, दोनों pipes का इसका first overtone और close pipe का first overtone same है. ठीक है, इसका first overtone होगा N1 for the open pipe is equal to N1 for the closed pipe. This is the closed pipe. देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अब मैं दोनों के फॉर्मूले लिख देता हूँ यहाँ पे. I'll write a formula over here. Fundamental frequency of the open pipe is given by V upon 2N. This is LO. Fundamental frequency of the closed pipe NC is equal to V upon 4L. LC. ठीक है. इसका फर्स्ट ओवरटोन होता है N1 O is equal to 2NO. Second overtone N2 for open pipe is 3NO. And pth overtone for open pipe is P plus 1 times the basic fundamental frequency. Whereas यहाँ पर क्या होता है देखिए, first overtone for closed pipe is 3 times the fundamental frequency. Second overtone of the closed pipe is 5 times the fundamental frequency. Pth overtone of the closed pipe is 2p plus 1 times the fundamental frequency. ऐसा बनेगा. ठीक है. अब इनके ये दोनों frequencies same है भाई. First overtone and first overtone. They are same. Well, let me solve this one. क्या बनेगा ये? So this will be 2 times NO, मतलब V upon 2 times NO is equal to 3 times NC, मतलब V upon 4 times LC. Well, 2 gets cancelled, V gets cancelled. So what is this? What do you get there? This will give me LC upon LO is equal to 3 by 4. I'll get this as first equation. I'll get this as the first equation. Well, यहाँ पर मुझे fundamental frequency ये वाला frequency मुझे already पता है. So I'll substitute this 600 hertz is the fundamental frequency. That is V upon 2 times L. यहाँ पर मुझे स्पीड ऑफ साउंड कुछ एज्यूम करना पड़ेगा. I'll assume it. मैंने देना चाहिए, नहीं दिया तो फिर let speed of sound in the air is 330 meter per second. This I'll assume. So let me substitute here. तो यहाँ से मुझे LO मिल जाएगा. ओपन पाइप का लेंथ मिल जाएगा. This will be 330 upon 2 into 600. ये क्या है? So this will become what? 3 11s are 3 2s are. So it is 11 upon 40. That is 4 3s are 12. 4 2s are 8. Okay. 7 so this is 0.275 meter is the length of the open pipe. और यहाँ से मुझे length of closed pipe भी मिल जाएगा. The length of closed pipe is equal to 3 by 4 into 0.275 meter. 0.275 meter का मतलब होता है 27.5 centimeter. This is the length of the open pipe. और closed pipe का length क्या होगा? देखिए अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए पहले इसको. तो 3 15 upon 4.
close by 0.20625 or 20.625 centimeter. This is the length of the closed pipe and length of the open pipe. Is that okay? 20.63 is length of the closed pipe and open pipe length is 27.5 centimeter. I think that's what the answer is given there. You see? Any doubts about this? No. Question number 19. A string 1 meter long is fixed at one end. Okay? The other end is moved up and down with a frequency of 15 Hz. 15 Hz frequency. Okay. Due to this, a stationary wave with 4 complete loops gets produced on the string. 4 complete loops. ये पूरा string है, इसके अंदर 4 loops तैयार हो चुके हैं. Total length is 1 meter. Okay. Okay. ठीक है. So find the speed of the progressive wave which produces the stationary wave. उसने हिंट दिया है. Remember that the moving end is an antinode. देखिए यहाँ पर अगर फिक्स है, दिस इज द फिक्स्ड एंड, तो यहाँ पर मूविंग एंड जो है वो एंटीनोड पे होगा. मतलब यहाँ पे 4 कंप्लीट लूप्स और एक इनकम्प्लीट लूप होगा ना, इस तरह से. ठीक है. दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी. पूरा लूप 5वां नहीं होगा, उसमें से सिर्फ आधा ही पार्ट लिया जाएगा. ठीक है. So this is one complete wave. 4 waves, 4 complete loops and 1 half loop. Now one loop is lambda by 2. So 1, 2, 3, 4. This L is equal to 1 meter is equal to 4 times lambda by 2. Okay. And अगर एक लूप लैम्बडा बाई 2 तो आधा लूप होगा लैम्बडा बाई 4. ठीक है. So ये कुल मिलाकर हो जाएंगे. If I take the LCM here, 4, so it will 4, 8 plus 9 lambda by 4 is equal to 1 meter. That means lambda is equal to 4 upon 9 meter. तो यहाँ पर मुझे n मिल गया और lambda मिल गया. I can find out what is the velocity of the wave, progressive wave which produces this is v is equal to n lambda. That is 15 into 4 upon 9. 20 upon 3. 6.67 meter per second. This is the velocity of the wave, progressive wave, which produces this. Is this clear to all? क्या ये सबको समझ में आ गया? Hello. Is this clear to all? Okay. We go for the next question now. Question number 20. A violin string vibrates with a fundamental frequency of 440 Hz. Violin का जो string होता है, it is 440 Hz. The fundamental frequency. What are the frequencies of the first and the second overtone? अब देखिए, violin का string मतलब ये इस टाइप का string होता है. So this is the fundamental frequency. इसका अगला जो फ्रीक्वेंसी इसी लेंथ पर हम बिठा दें, अगला ओवरटोन जो होगा वहाँ पे देयर आर गोना बी द 2 लूप्स. सो फर्स्ट ओवरटोन इज 2 टाइम्स है. उसके अगला सेकंड ओवरटोन इज गोना बी समथिंग लाइक दिस. इसी के अंदर ऐसे लूप्स तैयार होंगे. सो दिस इज द सेकंड ओवरटोन व्हिच इज 3 टाइम्स है. सो इट इज 2 into 440. That is 880 Hz. And this is 3 into 440. That is 1320 Hz. Is this okay? These are the
first and the second overtones, 880 hertz and 1320 hertz. Is this clear to you all? Because these are the waves which are on the straight wire. तो straight wire में उसका length फिक्स रख के अगला overtone इस तरह होगा, उसका अगला overtone इस तरह होगा. This is clear to you all? Hello? Question number 21. A set of 8 tuning forks is arranged in a series of increasing order of frequencies. Each fork gives 4 beats per second with the next one. Okay. The frequency of the last fork is twice that of the first. N8 is 2 times N1. N1, N2, N3 ये जो है इसमें जो what is the common difference there? Common difference is 4 beats. इन दोनों का difference है 4. इन दोनों का difference 4. So we call this as a common difference. ठीक है? So they are asking calculate the frequencies of the first and the last 4. Well, N8. This is the arithmetic progression. So N8 is N1 plus 8 minus 1 times D. Which is N1 plus 7 times D is 4 and N8 is 2 times N1. So N1 is 28 hertz and therefore N2 is 28 ka double 56 hertz. That's the answer. I mean that's so simple. Question number 21. I hope this is clear to you all. Hello? This is clear to you all? Agla question. Question number 22. A sonometer wire is stretched by the tension of 40 Newton. Okay. Before I start, इसका जो formula होगा stretch wire n is equal to 1 upon 2l square root of t by n. ये वाला formula. This is the fundamental frequency of the string. ठीक है 1 upon 2l. ये वाला हमने देखा है already. The sonometer wire is stretched by what is the load there? 40 Newton. T is equal to 40 Newton. Okay. It vibrates in unison with the tuning fork of frequency 384 Hz. So ये frequency is same as that of the tuning fork of frequency of 384 Hz. ठीक है? Tuning fork का frequency और इसका wire का frequency same होगा. That is called as unison. They are in unison. Okay. How many number of beats get produced in 2 seconds if the tension in the wire is decreased by 1.24 Newton? 1.24 Newton. So we want the number of beats if the tension is decreased by 1.24 Newton. Tension decrease here. So how many beats per in 2 seconds? Number of beats in 2 seconds. कितना रह गया? Let's start now. So now there are 2 cases over here. This is the first case. I'll apply this formula for the first case. कि वहाँ यहाँ पर tuning fork का frequency is equal to string का frequency is equal to 1 upon 2L square root of T. T is 40 Newton here upon mass per inch. ये फर्स्ट वाला है. दिस इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी. ठीक है. यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोर्क इज सेम एज दैट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग. ठीक है. इन द सेकेंड केस स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय दिस. सो इन द सेकेंड केस जो फ्रीक्वेंसी होगा स्ट्रिंग का वो डिफरेंट होगा देन द ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी इज फिक्स्ड हियर. ठीक है. तो स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी इन द सेकंड केस, दिस इज द स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी इन द फर्स्ट केस व्हिच इज इक्वल टू द ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी. ठीक है. इट इज गिवन बाय 1 upon 2l स्क्वायर रूट ऑफ 40 minus 1.24 डिवाइडेड बाय m. बाकी सब सेम है. तो आई टेक द रेशियो ऑफ दीस टू. इन दोनों का रेशियो मैं ले लेता हूँ और मुझे पता है कि भाई ये जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज इक्वल टू ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी मतलब 384 हर्ट्ज. तो यहाँ से मुझे N2 मिल जाएगा बिकॉज दिस इज वन इक्वेशन जिसमें L2L गेट्स कैंसल, M गेट्स कैंसल. सो व्हाट रिमेंस देयर? क्या रिमेंस, क्या वहाँ पे बचेगा? दिस विल गिव मी 384 अपॉन N2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग स्ट्रिंग
in the second case, is equal to square root of 40 upon 40 minus 1.24. So that will be 38.24, right? 76. ये कुछ आ गया स्क्वायर रूट ले लीजिएगा इसका. इधर टेल मी व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ दिस. आपको चाहिए तो आप इसका लॉग टेबल से कैलकुलेशंस कर सकते हैं. यू वांट मी टू डू द लॉग टेबल कैलकुलेशंस, आई डू इट. व्हाट डू यू से? लॉग टेबल कैलकुलेशंस कर लें. हेलो, लेट मी डू द लॉग टेबल कैलकुलेशंस. 40 का लॉग इट इज 1 point something something. 38.76 का log 1 point something something. Can you give me the log table values, please? Hello. चलिए आप ये बताओ कि मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ log table की values. 40 का log आता है 6021. 6021. 38.76 का log 38.7. It is 5877 5883 5883. Subtract करना है इसको because they are dividing. So it should give me 8. और मुझे स्क्वायर रूट चाहिए तो स्क्वायर रूट के लिए I will divide this by 2. I will divide this by 2. So this will become 0.00. और इसका मुझे फिर एंटी लॉग लेगा. एंटी लॉग ऑफ दिस 0.0069 का एंटी लॉग 0.0069 1016 This is 384 upon N2. So N2 is equal to 384 upon 1.016. ये मुझे आपको बताना था लॉग टेबल से, इसलिए मैंने बता दिया. Now you can tell me this thing directly. बताइए कैलकुलेटर से बता सकते हो. Please do that. Give me the value. क्या आएगा? You can multiply this. This will give me 384 divided by 1.016. 377.95. 377.95. मतलब 378. 377.95. So I'll take it as 378 hertz. This is the frequency in the second case. तो अब ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी तो सेम ही है. कितना है ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी? 384 हर्ट्ज. तो इन दोनों में कितने का बीट्स है? बीट्स मतलब व्हाट इज द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकेंड. 1 सेकेंड में कितने बीट्स आएंगे यहाँ पर? 6 बीट्स, 6 हर्ट्ज. एंड बट दे आर आस्किंग नंबर ऑफ बीट्स इन 2 सेकेंड्स. सो नंबर ऑफ बीट्स इन 2 सेकेंड्स अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो आएगा 12. So 12 beats are heard there in 2 seconds. That's the answer. 12 beats. Is this clear to you all? Question number 23. A sonometer wire of length 0.5 meter. Length of the wire 0.5 meter is stretched by the weight of 5 kg. So tension here is 5 kg. 5 kg weight. Okay. So the fundamental frequency of the vibration is 100 hertz. N is equal to 100 hertz. Calculate the linear density of the wire. Linear density मतलब mass per unit length. It's a very simple formula, substitution and answer type of question. कर लीजिएगा substitute. पर tension होगा 5 into 9.8 Newton. So answer is that N is equal to 1 upon 2L square root of T upon M. मुझे N पता है, L पता है, T पता है और M फाइंड आउट करना है. स्क्वायरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाइंग 4 N square is equal to T upon N. M is equal to T upon 4 N square T.
5 into 9.8 upon 4 n square 10 raised to 4 L square 25 into 10 raised to minus 2. So this will become 25 for the 100 or 10 raised to minus 2 gets cancelled. So this is 5 into 9.8 49 upon 10 raised to 4 4.9 into 10 raised to minus 3 kg per meter, that is the mass per unit length. This is called as linear density. 4.9 into 10 raised to minus 3 kg per meter. Is this clear to all? Hello? Hello? Check if it is clear to all. This was very simple, formula substitution and answer type of question. Agla question. Question number 24. The string of guitar is 80 centimeter long. Okay. String matlab L is equal to 80 centimeter long. Okay. It has the fundamental frequency of 112 Hz. L is equal to 112 Hz. If the guitarist wishes to produce the frequency of 160 Hz, he wants the frequency of 160 Hz. Where should the person press the string? Where should he press the string? No, गिटार में आपको पता होगा कि अगर this is the guitar, तो उसके जो strings होते हैं तो उसमें वो length change कर सकता है ना. So I'll use the formula n is equal to 1 upon 2l square root of t upon n. तो बाकी सब तो सेम ही रहेगा, मतलब टेंशन और n सेम ही रहेगा. So what I'll say here is n1. I'll apply this formula for the first case. This is n1 L1. N2, I'll have to calculate what is L2. So N1 is 112 upon 1 upon 2 into 80 square root of t by n. And N2 is 160 Hz. This is 1 upon 2 L2 square root of t by n. So square root of t by n gets cancelled, 2 gets cancelled. So what remains there is 112 upon 160 is equal to L2 upon 80. 80 to the 60, so L2 is equal to 56 centimeter पर उसको प्रेस करना पड़ेगा उसको 56 centimeter. He has to press the string has 56 centimeter. That is the answer. Is this clear to you all?